It's like my childhood dream come true. Fairy tale सच हो गई. जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ था तब से ये रीति चली आ रही है. अगर दुनिया की बात की जाए तो देर आर ओनली 4 सीजन्स, पर अगर हमारे इंडिया की बात की जाए तो देर आर टोटल 5 सीजन्स, इंक्लूडिंग द वन वेयर लव इज इन द एयर, द ग्रेट इंडियन वेडिंग सीजन. Namaste and welcome to an India Times exclusive series, The Weddings of India. I'm your host and your dost, Bani Batla, and today we are here to witness the epic Sindhi Punjabi wedding saga of Nitika and Pranav. Did you see the decor, guys? I love it. I mean, look at the colors. Everything is so pretty. And by the way, is Haldi ki madness and excitement mein I forgot to tell you a very important thing. We all have 1,000 things to give to a bride, but even every groom deserves a gift that's classic, momentous, and serves to remind him of the exact time jab uski life change ho gayi thi. When his other half joined, when his life became even more beautiful, and when his actual love story started. And knowing Pranav like he's a gentleman himself, I knew it that he would love this gift of mine because I have picked up something really special for him. It's the specially curated watch from Tissot's Gentleman Collection. Do you want to know how I picked it up? Come with me. If you're looking for the perfect watch for the groom-to-be, the pieces from the Gentleman Collection serve as the ideal everyday companions. These classic and elegant stainless steel designs are versatile for day to night wear, thus becoming the best choice for the memento of the most precious moments. Okay guys, so I am on my way to give this to Pranav and I'm super excited to see his reaction. I'm sure he's gonna love it. Come with me. Hi Pranav. Hi, congratulations. Thank you so much. You look so amazing. I love your kurta. Thank you. Are you excited? Yeah, super excited. Great. And I have an amazing gift for you. Okay, And it's from- right now? Sure, sure. I'm sure you'll love it though. I love this brand so much. Great. I've heard a lot about it. Yeah? But yeah, Already? let me check this out. Oh, nice. Okay. Oh, it's very beautiful. Yeah. Thank you. I'm glad you liked it. Yeah, I love it. That's one of my favorite brands as well. Mine as well. Great. Okay. Okay guys, so finally I'm ready. Though I'm little tired, but बहुत ज़्यादा excited हूँ because आज जो है अब we're going to the Sufi night. We're going to attend the Sufi night. And okay, tell me one thing. When you listen this word Sufi night, दिमाग में क्या आता है? For me, it's love and romance. You know, it's the epic way to celebrate love and romance. So today हम वही करने जा रहे हैं. We are going to go
and celebrate the love and romance of the epic wedding saga of Nitika and Pranav. Hi guys, first of all, thank you so much. We're super excited. And just tell me the connection of Sufi night and love, like Sufi and love. What is the connection? It's starting with God, so it's something related to spiritual. Sufi means something spiritual. Yaar, I'm already very late. Itika, are you ready? Guys, I'm already very late. बारात already आ चुकी है और क्योंकि हमने कल रात को सूफी नाइट पे इतना मज़ा किया था और हम इतनी लेट सोए हैं कि सुबह नींद ही नहीं खुली. आई मिस माई ब्रेकफास्ट ऑल्सो. बट अब जल्दी से रेडी होके पहुंचना है बिकॉज आई एम फ्रेंड्स विद प्रणव एज वेल. तो उसकी बारात में भी जाके डांस करना है थोड़ा सा. तो आई एम फाइनली हियर और मैं जल्दी से बारात को ज्वाइन करने वाली हूँ. नाउ बारात क्या होता है एक्चुअली इन एंशिएंट टाइम्स ना. बारात, द वर्ड बारात हैज कम फ्रॉम द वर्ड कॉल्ड संस्कृत वर्ड कॉल्ड वारा और वारा का मतलब होता है ग्रूम. एंड एंशिएंट डेज में ना बारात कुछ नहीं होता था. इट वाज जस्ट अ सिंपल प्रोसेस ऑफ वॉकिंग टुवर्ड्स द लोकेशन जहाँ पर उनकी शादी होगी. But since some modern ways हैं, so everybody wants to celebrate, and it's basically the celebration wherein the groom is like super happy to unite with the love of his life for a lifetime. So and usually जो Indian weddings होती है ना उसमें तो बारात इतने धूमधाम से लाई जाती है कि हम डोली लेके जाएंगे and what not. So yeah, it's fun. सबकी वो excitement, सबकी वो crazy madness is to an extreme level. So I'm very excited. So अब चलो, let's not wait any longer. Come with me and let's join the barat. We have the two sisters of the bride, Reeti and Surbhi. पहले तो मुझे ये जानना है how is Nitika looking because nobody is allowed to see her and I'm super excited to see her look. We are also waiting. है ना? We are also waiting, but I know it will be like fab look. Yeah. She'll look like a princess, I'm sure. And किस कलर का लहंगा है नितिका का? We have no idea. No clue. Oh great. So nobody knows. But ना मुझे एक और चीज़ पूछनी थी since I am a Punjabi and this is also a Sindhi Punjabi wedding. तो and Nitika and me are friends. So she just told me that there's some ritual जहाँ पर दुल्हन जो है वो दूल्हे को देखती है छुप के. तो क्या रिचुअल है उसके पीछे की स्टोरी क्या? आई एम श्योर समथिंग एक्साइटिंग वुड बी देयर. सो व्हाट इज इट एग्जैक्टली? सिंधीज़ में तो ये बहुत ही पुराना रिचुअल है जहाँ पे ब्राइड है ना ग्रूम के सहरे को चुपके से देख के बोलती है कि मुझे पीजी जंज भत में खूब बरकत विझो. क्योंकि जो ग्रूम है उनको हम विष्णु स्वरूप मानते हैं. तो जो ब्राइड है और वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती है. ब्राइड ग्रूम को सहरे को देख के चुपके से ये बोलती है कि जो मेरे फादर ने ये सब फंक्शन ऑर्गेनाइज करा है इसमें खूब बरकत रहे, यहाँ सब कुछ अच्छे से हो जाए. तो इसके पीछे ये पूरा रीज़न है और ये बहुत ही प्यारा सा रिचुअल है जो कि ब्राइड करती है ग्रूम को देख के. तो इट्स अ वेरी गुड रिचुअल. The moment I met Pranav, I mean, it was a very different feeling. It has never been like, that, okay, now let's get married. It was always like that. It was like
crazy feeling. For 2 minutes, everything zoned out, and I could only see her. Like, best feeling of my life. I always admired a very royal and traditional look because I love Rajasthan. So I wanted to be like a Padmavat full-on bride. So yeah, that was my inspiration. And obviously, when it comes to red, nobody does it better than Sabya. So that's what I went for. I guess the wedding jitters have started kicking in. It's like my childhood dream come true. Fairy tale sach ho gayi. So it's like the very, very amazing feeling. Now everything is coming to reality, whatever we manifested. I think it's all because of the Almighty's blessings that both of us are here. So I'm just hoping that all the rituals go really, really well as planned and everything happens beautifully. करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम। मुझे बस इतना ही पता है पंडित जी कि हमारे 7 फेरे होते हैं। तो कौन कौन से फेरे होते हैं? और मुझे सिर्फ एक ही फेरा याद है जिसमें कि ये बोला जाता है कि लड़का अपनी सारी कमाई आके लड़की को देगा। तो उसके अलावा मुझे कुछ और याद नहीं है। सबसे पहले तो जो आपने पूछा कि वो फेरा नहीं होता है, वो वचन होता है। वचन होता है। 7 वचन होते हैं जिसमें बैंक अकाउंट की डिटेल आपको बताना है। वटस्य पात्रस्य पुटे शयानम। ये वचन जो है वो शिव विवाह से शुरू हुए हैं। जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ था तब से ये रीति चली आ रही है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। 7 फेरे आजकल होने लगे हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार सिर्फ 4 ही फेरे होते हैं। 4 फेरों का मतलब होता है कि धर्म, अर्थ और काम के लिए स्त्री आगे चलती है और मोक्ष के लिए पुरुष आगे चलता है। अच्छा, ये 4 फेरों का मतलब ठीक है। वस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। Okay guys, I'm super excited. Finally all the wedding madness has come to an end. तो मैंने इनकी लव स्टोरी बहुत ही क्लोजली पिछले 10 सालों से देखी है, but today seeing them getting married and seeing them as a husband and wife was a different feeling altogether. It was so surreal and I'm super excited. I'm so happy and now finally we are here at their reception. बहुत ही amazing and special guest आने वाले हैं आज reception पे perform करने के लिए. He has a great name in the music industry, so I'm so looking forward to it and this is what I'm wearing for their reception tonight. It's a red carpet theme, so yeah, I am super excited. बहुत ही ज़्यादा excited हूँ मैं और without any further ado, let's go, let's enjoy the night. Also बहुत ज़्यादा भूख लगी है, so I want to eat something really amazing. थोड़ा सा चाट and चटपटा कुछ खाना है. But yeah, come, let me take you to the reception. Come.
I am so happy. The entire roller coaster of wedding has come to an end. वैसे तो मैंने इन लोगों को पिछले एक डेकेड से साथ देखा है, बट इन 2 दिनों में इनको साथ देख के ना खुशी कुछ और थी. Because you know, I've seen both of them celebrating a new chapter of their lives, and which is so magical. I think मेरा जो belief है ना in love वो re-establish हो gaya hai. And I'm super happy, and I hope you are watching this video and you're having as much fun as I had in this wedding. And remember, every groom deserves a special gift, and there's nothing better than the Tissot Gentleman collection. So अगर आपके पास भी ऐसी कोई special wedding है, अगर आपके भी किसी friend या family में कोई भी ऐसी wedding आ रही है, so you know what to give them. So this is Vani Bartla signing off, and you are watching me on India Times exclusive series Weddings of India, जहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं बहुत ही different Indian cultural wedding, जहाँ पर आपको different cultures के बारे में पता चलता है, and उनकी diversity से भी हम आपको introduce कराते हैं. Don't forget to like, share and subscribe so that you don't miss anything. See you at the other end. Bye.